आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना, कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा, वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी गांव में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों हजारों, लाखों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास है। यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्रीमान। Minister Rajnath Singh in Jammu and Kashmir. We've also seen Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Manoj Sinha, with him. Key army officials are also over there. He has addressed the armed forces. He has stated that, of course, purging terror from Jammu and Kashmir is
the priority at the moment, but he's also said that protection of civilian lives is paramount. He's of course arrived in Jammu to review security after the Poonch attack on the armed forces convoy, where 4 of our brave hearts were martyred earlier. This visit of the Defence Minister, of course, comes after Army Chief General Manoj Pandey had also visited Jammu and Kashmir earlier. Meanwhile, joining me on the broadcast is my colleague Ajay Jandal. Ajay, over to you. We've just had the Defence Minister addressing the armed forces. What can you tell our viewers? Of course, he's in Jammu and Kashmir to review the security situation, even as counter-terror operations are underway. Over to you. Well, we have seen that in the recent past how, continuous terror attack and the incidents for terror-related activities that have increased in the Jammu, Rajouri, Poonch region. And definitely there is a challenge before the security forces that they have to ensure that every civilians, those who are living in this area, their life has to be protected, and security forces plan up, saving the borders as well. Forces, they are ensuring that everything has to be secured, but terrorists, those who are planning to revive terrorism here, that is a major challenge for the forces. So for that purpose, we have seen that 2 days back, Army Chief visited Rajouri, Poonch, and he took the stock of situation, and then he also, met the ground forces and ground commanders to review the security scenario and arrangements what security forces have done to tackle, situation over here. So now Defence Minister Rajnath Singh is meeting the ground commanders and the ground forces, those who are continuously, operating here in the Rajouri Poonch region to foil Pakistan's nefarious plan of disturbing, peace. And for forces, those who are here, they need to be appreciated, because we have seen that number of terror attacks which took place and number of attempts they have foiled. That was only possible because of the security forces, and the Dangri-like incident which took place in Rajouri's one village in which 7 civilians were killed. That number of times has been foiled by the security forces, which was only possible because of the security forces, and otherwise there is the specific input that Pakistan have pushed number of terrorists, those who are, specially trained for, carrying out major attacks on the civilians and the defense forces in this region. Indeed, also something that the Defence Minister has highlighted is that the Indian Army is more equipped than before. Ajay, you were also telling us how modern technologies such as drones are being used on the ground. What can you tell our viewers about this? Well, yes, we have seen that in the recent past, on 22nd and 23rd of this month, one drone activity was spotted in the Plamwala sector where 6 IDs, pistols, hand grenade and other ammunition was recovered, and it was an attempt by the Pakistan to push in, weapons and, explosive here in this region to carry out multiple attacks. That was foiled by the army and the police in that region, and a number of other attempts also took place. We have seen that an infiltration attempt took place in the Akhnur sector only a few days back. That was also foiled by the defense forces in this region. So that indicates that Pakistan's plan to push in terrorists and carry out major attacks here in the Rajouri Poonch region that is continuing. But our forces, they are foiling number of attempts. They are foiling their nefarious plan of vitiating peace over here. That is a major issue, and that's for that purpose Indian Army troops, they are continuously operating and doing searches in the forest area to unearth the terror network in this region. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.